Assalamualaikum. Beta, in this video lecture, I'll start with the malignant conditions of the ovary. Previously, I have delivered you the benign conditions of the ovary. I discussed everything, all the cysts, the functional cyst in the ovary, the inflammatory cyst, yeah, and the benign tumors, right, that can cause the cystic growth in the ovary. Everything that was there was actually responsible for the cystic growth in the ovary, and that can be detected on the transvaginal ultrasound scan I told you, and also the history and examination has got its own significance. Well, the malignant conditions of the ovary, they are the second most common gynecological malignancy and the major cause of death from the gynae cancer, ovary ka cancer, right? The mean age of presentation is 64 years of the age, and it is rare in young women, only seen in up to 3% women who are below 35 years of the age. तो मोस्टली ये ओल्ड एज का कैंसर है ओवरी का. ओवरी की जो मेलिग्नेंट डिजीजेस हैं, जो कैंसर्स हैं, उसको ज़रा क्लासीफाई करें हिस्टोलॉजिकली. तो ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन हिस्टोलॉजिकली देयर आर 4 टाइप्स. ओवरी का एक जो होता है बेटा एपिथेलियल ओवेरियन ट्यूमर होता है, जो कि 80% कॉमन होते हैं, जो कि सरफेस एपिथेलियम ऑफ ओवरी से ओरिजिनेट होते हैं. दे इंक्लूड द हाई ग्रेड सीरस कार्सिनोमा. एक होता है सीरस, एक होता है म्यूसिनस. ठीक है, सीरस के दोनों इसी में आ जाते हैं बेटा, हाई ग्रेड सीरस भी और लो ग्रेड सीरस भी. ठीक है, उसके अलावा क्लियर सेल कार्सिनोमा, एंडोमेट्रॉइड कार्सिनोमा और म्यूसिनस कार्सिनोमा. सो आई होप यू आर गेटिंग इट. द ट्यूमर्स ऑफ द ओवरी विच आर राइजिंग फ्रॉम द एपिथेलियम, उसमें जो सीरस वैरायटी है, हाई ग्रेड लो ग्रेड दोनों एपिथेलियल ओरिजिन रखते हैं. म्यूसिनस जो है वो एपिथेलियल ओरिजिन रखता है, क्लियर सेल टाइप एंड द एंडोमेट्रॉइड टाइप. ठीक है, अच्छा, इसके अलावा बेटा कम्स अनदर 10% टाइप, दैट इज द सेक्स कॉल्ड स्ट्रोमल ट्यूमर राइजिंग फ्रॉम द स्ट्रोमा ऑफ द ओवरी. राइजिंग फ्रॉम व्हाट? स्ट्रोमा ऑफ द ओवरी. दे इंक्लूड द ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर और दूसरा सर्टोलिलेटिक सेल ट्यूमर. सर्टोलिलेटिक ज़्यादा मेल में होता है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है फीमेल में भी होते हैं, तो वो जो डिफ्रेंसिएशन नहीं हो पाती तो सेल्स रिटेन करते हैं, और वो सर्टोलिलेटिक सेल ट्यूमर जो होता है वो फीमेल में भी होता है. और गैनेंड्रोब्लास्टोमा, आई डोंट थिंक यू हैव हियर्ड दिस टर्म बिफोर इन पैथोलॉजी, बट या हियर गैनेंड्रोब्लास्टोमा इज आल्सो अ सेक्स कॉल्ड स्ट्रोमल ट्यूमर. द germ cell tumors like the dysgerminoma, endometrial sinus, teratoma and the choriocarcinoma, of which teratoma is really important, जिसको हम डर्मोइड सिस्ट भी कहते हैं, जिसकी वजह से हमने बताया था कि मोस्टली यही वो रीज़न होता है जिसकी वजह से ओवेरियन टॉर्जन होता है. ठीक है, और बाकी मेटास्टेटिक ट्यूमर्स भी होते हैं जो ओवरी में कहीं और से आते हैं, खास करके जो एब्डोमिनल पेरिटोनियम से आता है उसको हम सी एब्डोमेन से आता है उसको हम क्रूकनबर्ग ट्यूमर कहते हैं. ठीक है, स्टार्टिंग विथ epithelial tumors of the ovary. They can be either benign, they can be either malignant or borderline tumors. Surface epithelium से आने वाले जो ट्यूमर हैं, they can be benign, they can be malignant, they can be borderline. The borderline tumors, let me tell you, they make up the 10% of the epithelial tumors. They are well differentiated. They show some signs of malignancy, that is the cells show atypia and the pleomorphism. They show invasion, but they do not metastasize, obviously because they are not malignant. They are only borderline tumors, so they can show some invasion into the tissue but not the metastasis. Look, this is the invasion, that the tumor is going deep into the tissue. This is the invasion. You know what is the metastasis? This is the tumor growing and it splits off its actual origin and then grows far away like this. So the borderline tumor shows the invasion but not the metastasis. Borderline tumor can be the mucinous, can be serous. Mostly it is serous and less commonly it is mucinous. So I hope you are clear with this, but these are few things you have to keep in your mind. For better understanding of the malignancies, you can go watch the lectures on pathology. So far, what have I told you? You need to keep in your mind. एक हमने क्लासिफिकेशन बनाई ओवरी के ट्यूमर्स की,
ठीक है। कुछ एपिथेलियम से ओरिजिनेट होते हैं, कुछ स्ट्रोमा से ओरिजिनेट होते हैं, कुछ जर्म सेल से ओरिजिनेट होते हैं, कुछ मेटास्टैटिक होते हैं। एपिथेलियम से ओरिजिनेट होने वाले ट्यूमर्स की बात करें तो कुछ बिनाइन होते हैं, कुछ बॉर्डर लाइन होते हैं, कुछ मैलिग्नेंट होते हैं। सही, कुछ बिनाइन होते हैं, कुछ बॉर्डर लाइन होते हैं, कुछ मैलिग्नेंट होते हैं। अच्छा, ये जो सीरस और म्यूसिनस वैरायटी है ना, इसको हमने रखा है बॉर्डर लाइन में। ओके, एज मैंशनड। देखिए, बिनाइन, मैलिग्नेंट, बॉर्डर लाइन 3 है। बॉर्डर लाइन के अंदर हमने इट कैन बी म्यूसिनस, इट कैन बी सीरस, मोर कॉमनली इट इज सीरस। सो now talk about the malignant ones, right? Yeah, the malignant ones like the serous carcinoma, the mucinous carcinoma, obviously they will be high grade here. In the borderline they were the low grade mucinous, low grade serous, but here comes the high grade serous and the high grade mucinous. Serous carcinoma, it can be borderline, it can be malignant. Mucinous carcinoma, it can be the borderline, it can be the malignant. It is said to be the borderline when it shows the invasion only and not the metastasis. And there it was low grade, but here it is high grade. It will show the invasion and the metastasis, and it makes up 95% of the malignant tumors of the ovary. A characteristic feature of the serous carcinoma is it shows the samoma bodies, that is the concentric rings of the calcification with the calcium, right? तो होती है ओवरी की मेलिग्नेंसीज ओल्डर वुमेन में है। बायलेटरलिटी इसकी 70% है, मेलिग्नेंट पोटेंशियल इसका बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जहाँ तक म्यूसिनस की बात करें, अच्छा, इसका ओरिजिन जो होता है वो फलोपियन ट्यूब से होता है। वो अलग बात है कि सरफेस एपिथेलियम ऑफ ओवरी का ट्यूमर है, लेकिन इसका if you want to have the better understanding of this question, go watch out the pathology lectures, but for now you keep in your mind that the actual origin of the serous carcinoma is the fallopian tube. फिर fallopian tube से फिर वो ओवरी में आता है, ठीक है। And the mucinous tumor, particularly the high grade mucinous variety, it shows the cervix like cells, 10% incident, and it's a large malignancy, it is multiloculated. इसका malignant potential थोड़ा कम होता है, but it is mostly bilateral. A few more malignant tumors of the ovary, particularly the surface epithelial tumors, as I mentioned, the endometrioid tumor, the clear cell carcinoma, and the Brenner tumor. Well, Brenner tumor shows the epithelium of the bladder, that is the urothelium or the transitional epithelium. It mostly present with the most postmenopausal bleeding and the Meeks syndrome. ठीक है, Meeks syndrome was a combination of the tumor, pleural effusion, and the ascites. Endometrioid tumor shows the epithelium of the endometrium. It's a well differentiated tumor. Prognosis is really good and associated with the endometriosis. And comes the clear cell carcinoma lastly. The clear cell carcinoma shows the renal cells. It contains the clear renal like cells and it is associated with the endometriosis. So what did I say बेटा, कि हमने कुछ इस तरीके से बनाया कि जो ओवरी के ट्यूमर्स हैं, ओवरी के ट्यूमर्स को हिस्टोलॉजिक क्लासिफिकेशन की जब हमने, तो हमने कहा कि ये एक होते हैं एपिथेलियल ट्यूमर्स, ठीक है, और एक होते हैं जर्म सेल ट्यूमर्स, और एक होते हैं आपके सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स, ठीक है, और एक, ठीक है, ओके, मेटास्टैटिक ट्यूमर्स। अच्छा, एपिथेलियल ट्यूमर्स फिर हमने कहा ये बॉर्डर लाइन भी हो सकते हैं, ये बिनाइन भी हो सकते हैं, बॉर्डर लाइन भी हो सकते हैं, मेलिग्नेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर लाइन के अंदर क्या आ जाता है, लो ग्रेड सीरस, लो ग्रेड म्यूसिनस, लो ग्रेड सीरस, लो ग्रेड म्यूसिनस इन द border line variety. But in the malignant variety comes what? High grade serous, high grade mucinous, Brenner tumor, endometrioid tumor, and the clear cell carcinoma. This is what you have to keep in your mind. That's it, right? And few things related to the each tumor, just like that. The endometrioid tumor has got the endometrium like epithelium, the clear cell carcinoma has got the renal cells, and the Brenner tumor has got the bladder epithelium, mucinous tumor got the cervix like cell, the serous carcinoma got the fallopian tube like cells. This is what you have to remember, beta, right? I hope you are clear with this. So we'll now talk about the prevention of the tumors of the ovary. Look, what I discussed few minutes back, I told you what is the classification of the tumors of the ovary, what are the each types, and what are their characteristic features. In gynecology, you will better understand the prevention programs of the tumor cancers, their clinical presentation, their investigation, and the management program.
If you want to have the better understanding of the pathogenesis of the tumor, then you should watch the pathology lectures, right? So the prevention of the ovarian tumors, here I will go one by one, and then the clinical picture I'll tell you, and then the investigation program. The prevention you can do, if let's suppose you are at risk of developing ovarian cancer. What can be the risk? If let's suppose you are a carrier of the BRCA mutations, BRCA1, BRCA2, these are the mutations that make you susceptible to develop the breast cancer, ovarian cancer, right? So if you are at risk and you carry these mutations, what you can do is the prophylactic bilateral salpingo-oophorectomy. Prophylactic bilateral salpingo-oophorectomy, and if you prophylactically remove both the ovaries, both the tubes, तो बेटा पॉसिबल ही नहीं है कि कहीं से ट्यूमर ग्रो करेगा, ठीक है, भले ये म्यूटेशंस मौजूद हों। ऐसा करने से ओवरी के कैंसर का रिस्क कम हो जाएगा और ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क अप टू 50% रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, प्रोफाइलेक्टिक रिमूवल से। अच्छा, अगर पेशेंट यंग है तो उसमें सिर्फ सल्पिंजेक्टमी करते हैं, ट्यूब निकालते हैं, ताकि मेंसेस जो है वो बरकरार रहें, क्योंकि ओवरीज नहीं होंगी तो फिर मेंसेस भी ख़त्म हो जाएंगे ना। What else you can do is you can perform the hysterectomy, tubal ligation. You can provide the patient with the COCP. COCP also reduce the risk of ovarian cancer and the endometrial cancer. How the patient comes to you if he or she is suffering from the ovarian mass, ovarian cancer? Look, the ovarian cancer has got poor prognosis because of the late presentation. Ovarian cancers are not detected early, and because they are not detected early, so they have got poor prognosis. The patient presents very late. So if there is any malignancy in the ovary, so that malignancy, that tumor, that mass will obviously cause the abdominal girth or the bloating. There will be some pain in the pelvis or the abdomen, difficulty eating and feeling full quickly because of the abdominal bloating. You feel like you just have some food very quickly, you get full, right? And you say, okay, I'm done and can't have any more. Bowel habits are altered because of the large mass in the ovary compressing the bowel. Urinary incontinence because of the pressure effects of the tumor on the, because of the pressure effects of the tumor, this is the ovary, and because this is the large mass, and because of the compression effect of the mass on the bladder or the bowel, the pressure effects are produced, right? So the urinary incontinence will be there, backache, bleeding, and the fatigue are the clinical features that the patient comes to you if he is having some problem with the ovary, especially the malignancy of the ovary. How are you going to investigate that if this is the ovarian cancer? So ये तो खैर पहले बेनाइन कंडीशंस में भी डिस्कस हुआ था कि हम जो है हिस्ट्री एग्जामिनेशन लेते हैं, उसके बाद जो है ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन करते हैं, जो कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है, लेकिन ये नली पेरस वुमेन में नहीं करते, अनमेरिड में हम ये मेरिड में करते हैं। फिर अनमेरिड में हम क्या करते हैं बेटा, ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करते हैं। बाकी चेस्ट एक्सरे क्यों करते हैं, ताकि लंग मेटास्टेसिस को रूल आउट कर सकें। ईसीजी हार्ट इन्वॉल्वमेंट को, बाकी बेसलाइन तो करानी पड़ती है बेटा, कोई भी कंडीशन हो, सीबीसी, एलएफटी, सीरम यूरिया, सीटी एमआरआई ऑफ द एब्डोमेन एंड द पेल्विस, ठीक है। और उसके अलावा जो मेन चीज़ है बेटा, CA-125 ओवेरियन कैंसर के अंदर खास करके एपिथेलियल जो ओवेरियन कैंसर्स होते हैं उसमें कराते हैं, लेकिन ये बड़ा नॉन स्पेसिफिक होता है, क्योंकि ये सिर्फ ट्यूमर्स के अंदर पॉजिटिव नहीं होता, दूसरी कंडीशंस के अंदर भी CA-125 पॉजिटिव होता है, जैसे प्रेगनेंसी में, एंडोमेट्रियोसिस में, फैटी लिवर डिजीज़ में। तो हम इसके ऊपर कम्प्लीटली रिलाई नहीं कर सकते, we can't completely rely on CA-125. Yeah, CA-125 is good. It is elevated in the cancers of the ovary, but as I told you, it is non-specific. It also elevates in other conditions as well, which I just told you. Now comes the staging of the cancer of the ovary, which is really important. The staging of the tumors of the ovary. Previously, what have we discussed? The FIGO staging of the endometrium, cervix, vagina, vulva. Now comes the staging of the ovary, and it is said to be the stage 1 when the tumor is present in the ovary. It is confined to ovary. It is said to be, okay, 1 is 1A, 1B, 1C is said to be 1A when there is only involvement of the one ovary,
and the surface of the ovary and the capsule of the ovary are not involved, and there is no ascites because of no involvement of the peritoneum. Said to be 1B when not one ovary but both the ovaries are involved, but the surface and capsules are still not involved and there is no ascites. 1A और 1B में क्या फ़र्क हुआ? In 1A only one ovary is involved, in 1B both ovaries are involved. Said to be 1C when one or both the ovaries are involved, but the main thing is the surface and the capsule is ruptured. That means surface and capsule are involved and there is the ascites. Okay? In this case still the prognosis is really good, up to 90%. It is said to be stage 2 when the tumor has gone from ovary to the pelvis. The tumor is not present. The tumor is not present, not confined to ovary now. It has gone to the pelvis. It is said to be 2A when the tumor has gone to the fallopian tube and the uterus. Said to be the 2B when the other pelvic organs are also involved. Said to be the 3B when there is metastasis, diffuse metastasis in the pelvis, right? And okay, this is stage 1 and stage 2. Don't really make it confusing. Then comes the stage 3 when it is metastasized to the abdominal peritoneum. In stage 2 the tumor had gone to the pelvis, as I can show you that in stage 1 it was in ovary, and in stage 2 it went out of the ovary to the pelvis, and in stage 3 it is metastasized to the abdominal peritoneum, right? Here in 3A, okay, in stage 3 the tumor has gone to the abdominal peritoneum. अच्छा, एब्डोमिनल पेरिटोनियम में जाने के बाद अगर ट्यूमर विजिबल ना हो, सिर्फ हिस्टोपैथोलॉजी पे ही नज़र आए, जैसे कि इट इज़ सेड टू बी देन 3A, इट इज़ सेड टू बी 3A व्हेन द ट्यूमर ओनली अंडर हिस्टोपैथोलॉजी पेरिटोनियल इम्प्लांट कैन बी सीन. ठीक है, समझ आई बात बेटा? इट इज़ सेड टू बी स्टेज 3 व्हेन द ट्यूमर हैज़ गॉन आउट ऑफ द ओवरी, आउट ऑफ द पेल्विस टू द एब्डोमिनल पेरिटोनियम. और एब्डोमिनल पेरिटोनियम में इतना सा डिपॉजिट हुआ है कि हमें सिर्फ हिस्टोपैथोलॉजी पे नज़र आता है, तो देन इट इज़ सेड टू बी 3A. अगर बगैर हिस्टोपैथ के नज़र आ जाए, इम्प्लांट वैसे ही ग्रॉसली नज़र आ जाए, हिस्टोपैथ करने की ज़रूरत नहीं, बड़े ग्रॉसली नज़र आ जाए और उसका साइज़ 2 सेंटीमीटर से कम हो, तो इट इज़ सेड टू बी 3B. और अगर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा साइज़ हो, बगैर हिस्टोपैथ के नज़र आ जाए, ग्रॉसली जो है इम्प्लांट्स नज़र आ जाएँ पेरिटोनियम के ऊपर ट्यूमर के, सेड टू बी 3C. ठीक है, सो दैट्स इट. एंड द स्टेज 4 when there is a distant metastasis out of the abdomen, even to the lungs, to the heart, to the bones. In this case the prognosis is very low. ठीक है, जैसे कि मैंने बताया ये कहाँ कहाँ जा सकता है डिस्टेंट मेटास्टेसिस, लिवर पेरेन्काइमा में, ठीक है, लंग्स में प्लूरल इफ्यूजन कराएगा और हार्ट में भी जा सकता है. व्हाट इज़ द पॉसिबल मैनेजमेंट वी कैन डू इन केस ऑफ द ओवेरियन ट्यूमर्स? I'll tell you बेटा. The management part of the tumor of the ovary include maximum debulking. बेटा, क्योंकि आपको पता है कि ओवरी का ट्यूमर जो है बेटा वो बहुत लेट डायग्नोस होता है, बहुत लेट डिटेक्ट होता है, और जब तक डिटेक्ट होता है वो बहुत दूर जो है मेटास्टेसाइज करके जा चुका होता है. ठीक है, तो उस केस में हम फिर मैक्सिमम डीबल्किंग करते हैं. देखते हैं कि जहाँ जहाँ ट्यूमर जो है वो मेटास्टेसाइज करके जा चुका है, हम उसको सर्जिकली रिमूव करते हैं. ना सिर्फ रिमूव करते हैं बल्कि रिमूव करने के बाद उसको हम पोस्ट ऑपरेटिव कीमोथेरापी भी देते हैं. ठीक है बेटा, या सो मैक्सिमम डीबल्किंग करेंगे, मैक्सिमम रिमूवल करेंगे. अब देखें ओवरी का ट्यूमर है, आपको पता है फलोपियन ट्यूब में भी जाता है, तो आप क्या करोगे, बायलेटरल साल्पेंजोओफरेक्टमी करेंगे, ट्यूब भी निकाल देंगे, ओवरी भी निकाल देंगे, सो कैंसर विल गेट आउट ऑफ इट. You know it can go to the uterus, so you will perform the abdominal hysterectomy as well. You know, आपको पता है बेटा कि ये जो ट्यूमर है ओवरी का मेटास्टेसाइज होकर ओमेंटम में भी जाता है, सो यू कैन परफॉर्म द ओमेंटेक्टमी, रिमूवल ऑफ द ओमेंटम. अगर इंटेस्टाइन इन्वॉल्व हुआ है बाय मेटास्टेसिस फ्रॉम द ओवेरियन ट्यूमर, रिमूव दैट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, राइट. पेरिटोनियम तो इन्वॉल्व होती ही होती है, तो फिर आप उस पेरिटोनियल जो पीस है उसको भी आप स्ट्रिप ऑफ करते हो. ठीक है, splenectomy if there is involvement of the spleen,
and the removal of the lymph nodes which are involved in the tumors of the ovary. I know this is very much difficult and very much ethically probably not possible to remove all these parts in the body. That is called the maximum debulking. हाँ, इससे बहुत सारा जो ट्यूमर लोड है वो कम हो जाता है, मेटास्टेसिस सारी ख़त्म हो जाती है, लेकिन ऑब्वियसली फिर ये इतने सारे पार्ट्स रिमूव करने के बाद इनकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस भी होंगी। ठीक है बेटा, तो अगर कोई ये अफोर्ड नहीं कर सकता तो और उसको अपनी फर्टिलिटी भी बचानी है तो उसको हम फिर सिर्फ कीमोथेरापी देते हैं। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं बाय द वे बेटा कि आप ये सर्जरी करके सर्जरी के बाद भी कीमो देते हैं, लेकिन जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते वो सिर्फ कीमो कराते हैं, ताकि जो लोग फर्टिलिटी स्पेयर करना चाहते हैं, अपनी बचाना चाहते हैं, ऑब्वियसली दे विल नॉट गो विथ स्टेरेक्टॉमी, बायलेटरल सल्पिंजियोफ्रेक्टॉमी, दे वुड लव टू गो विथ द कीमो ओनली. But by the way, you need to keep in your mind that even after this surgery, you can provide the patient with the chemo. You have to provide the patient with the chemo, post-operative chemo. It is a platinum-based chemo mixed with the paclitaxel. ये क्या करता है बेटा, अब दो चीज़ें हैं इसके अंदर, एक प्लेटिनम है और एक पैक्लिटिक्सल है. प्लेटिनम causes the cross linkage of the DNA strands, arresting the cell cycle. जब सेल साइकिल अरेस्ट हो जाएगी तो बेटा कैंसर के सेल्स ग्रो नहीं करेंगे. ठीक है, प्लेटिनम कंपाउंड यूज्ड इज कार्बोप्लेटिन. ठीक है, एंड इट इज़ लेस रीनल टॉक्सिक. तो आप जब कीमोथेरापी देंगे तो उसमें प्लेटिनम यूज़ करते हैं, प्लेटिनम सेल साइकिल को अरेस्ट करता है. कौन सा प्लेटिनम का कंपाउंड यूज़ करते हैं हम? कार्बोप्लेटिन यूज़ करते हैं. ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी इतनी नहीं कराता है. ठीक है, और जो पैक्लिटिक्सल ऐड करते हैं बेटा वो माइक्रोट्यूबुलर डैमेज करता है. आपको पता है सेल साइकिल को चलाने के लिए माइक्रोट्यूबुल ज़रूरी है, अगर वो डैमेज हो जाएंगे पैक्लिटिक्सल की वजह से तो सेल साइकिल फिर से अरेस्ट हो जाएगी. लेकिन पैक्लिटिक्सल का एक बड़ा मसला है कि टोटल बॉडी हेयर लॉस हो जाता है. हर जगह से जो बॉडी में बाल हैं, सर पे, बॉडी पे, वो सारे लॉस हो जाते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डोज. इसी वजह से जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं जब वो कीमो लेते हैं तो वो गंजे हो जाते हैं, उनके सारे सर के बाल चले जाते हैं. ठीक है, अच्छा, और इसके बाद एक और चीज़ आप अपने जहन में रखें लास्टली कि या फर्टिलिटी स्पेयरिंग ट्रीटमेंट जो है ओनली कीमो. वैसे तो तरीका ये है कि आप जो है मैक्सिमम डीबल्किंग करें, मैक्सिमम डीबल्किंग करने के बाद आप फिर कीमो भी दें. ये तो आइडियल ट्रीटमेंट है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम डीबल्किंग इज़ रियली something you have to be very careful with. But if you want to spare the fertility, you can't go with the maximum debulking. You can't remove your uterus, your tubes, your ovary, your peritoneum, your spleen. So only go with the chemo, right? So this is all about beta this lecture on the malignancies of the ovaries. I hope you got some points. So if you have any question beta, you can ask me anytime, anywhere. Thank you so much. Class dismissed.